unstoppable. Youngsters, teenagers, like to listen to the song I'm unstoppable. And is it the right thing to be unstoppable? Why do we want to be unstoppable? So I want to tell you the story. And because whenever you have a goal इन अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई बड़ा गोल है. जिनकी लाइफ में छोटे गोल होते हैं, वो छोटे गोल को अचीव करने के लिए टेंशन नहीं करते, बिकॉज वो उनकी रीच के अंदर होते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं. बट देन दे डोंट नीड मोर पावर. दैट्स व्हाई दे डोंट कम टू वीडियोस लाइक दिस. बट सिंस यू आर हियर मींस यू हैव अ बिग गोल टू अचीव. और जब भी एक बड़ा गोल अचीव करना है, आपको आईएएस का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, या नीट का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, या एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनना है, या पॉलिटिक्स में कुछ, व्हाटएवर इट इज, अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, समथिंग विल स्टार्ट टू कम ऑन योर वे. अगर उस गोल के लाइफ में, रास्ते में कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा. समटाइम्स पीपल विल कम इन योर वे. कई बार आपके लाइफ में लोग आना शुरू हो जाएंगे, अब जो आपको कोशिश, जो अपने काम करते करते, बट दे विल, आपको लगेगा कि वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं. समटाइम्स circumstances come in your way. Sometimes आपकी अपनी लाइफ will start to come in your way. कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, कभी हेल्थ चैलेंजेस हैं, कभी और डिफिकल्टीज हैं. समटाइम्स यू योरसेल्फ विल स्टार्ट टू कम ऑन योर वे. और उस टाइम पे अगर आप अनस्टॉपेबल नहीं हैं, हल्की सी मुसीबत आते ही यू विल स्टॉप. ईयर्स विल पास, और बहुत साल बाद आप पलट के देखोगे और आपको लगता है वो मोमेंट पे अगर मैं रुका नहीं होता, आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स. राइट. सो लेट मी स्टार्ट विद यू विद अ स्टोरी विद यू. यूएस में एक बहुत साल पहले की बात है. देयर वाज अ जर्नलिस्ट, देयर वाज अ लेडी जो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, एंड शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग. शी यूज्ड टू राइट एंड पीपल वुड से वाओ, यू आर गिफ्टेड, यू आर सो गुड. एंड देन सो मच सो दैट हाई स्कूल के बाद उसको स्कॉलरशिप में एक बहुत प्रेस्टिजियस, लाइक हार्वर्ड की तरह की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जर्नलिज्म का कोर्स मिल गया ऑन स्कॉलरशिप. एंड शी वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एंड फर्स्ट वीक ऑफ द सेमिनार somebody came, एक बाहर से प्रोफेसर आए और उन्होंने कहा, एंड उन्होंने एक असाइनमेंट दिया, एंड शी रोट विद ऑल ऑफ हर हार्ट. एंड उसके बाद उन्होंने चेक किया, उसके बाद उनको असाइनमेंट दिया, एंड इट वाज एन एफ. यू फेल्ड. शी couldn't believe it. She went to the professor and said, how come I get F? He said, because you cannot write. She said, this cannot be true. I have written all my life. Everybody, people praised me. और हर जगह पे वो लोग कहते थे कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं गिफ्टेड हूँ, एंड मुझे लिखना है. एंड ही सेड, उन लोगों को बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बचाओ, स्टॉप राइटिंग. शी सेड, अगर मैं लिख नहीं पाई, इस कोर्स में पास नहीं हो पाई, मेरा स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगा. ही सेड, एक डील करते हैं, तुम जर्नलिज्म छोड़ दो, यू टेक सोशियोलॉजी, और मैं तुम्हें पासिंग ग्रेड दे दूंगा. एंड शी थॉट अबाउट इट. शी चेंज्ड हर मेजर, स्टार्टेड टू स्टडी साइकोलॉजी. बट अंदर एक डिजायर थी हमेशा से लिखने की, और उस दिन के बाद से उसने कभी नहीं लिखा. 15 साल के बाद उसके पास ही एक जगह पे कुछ जर्नलिस्ट आए थे, एंड दे केम टू कवर अ मर्डर. शी वेंट देयर, एंड सब लोग बाकी चीज़ों के बारे में देख रहे थे. शी वेंट टू टॉक टू देम. शी सेड, यू आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. मैं हमेशा से जर्नलिस्ट बनना चाहती थी. एंड पर्सन ने कहा, तुम्हें रोका किसने है, कुछ दिखाओ, क्या लिखा है तुमने. शी सेड, नहीं, मैंने लिखा नहीं, बिकॉज अब मुझे कहा गया था कि मैं गिफ्टेड नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं लिखती हूँ. He said, किसने कहा? She said, हार्वर्ड प्रोफेसर ने कहा. क्या हार्वर्ड प्रोफेसर को क्या पता है कि लिविंग के लिए लिखा कैसे जाता है. यू डू वन थिंग, यू राइट समथिंग, सेंड इट टू मी, एंड आई विल टेल यू. शी वेंट बैक, अपना टाइपराइटर उठाया, शी रोट फॉर 1 full year, और उसके बाद बुक वापस भेजी, और उसको इमीडिएटली पसंद आ गई. उसने अपने पब्लिशर से बात की, उसको पसंद आ गई. आते ही द सेम बुक बिकेम डांसिंग विद द स्टार्स. एक मेजर हॉलीवुड मूवी बनी, एंड इट अर्नड हर a few $1 million in royalty. She wrote the second book, again a major movie, millions of dollars again. It's not millions of dollars. She wasted 15 years of her life because somebody came in her way. She was not unstoppable, and then she couldn't get it. Don't let it happen with you. You want to be unstoppable. Once a goal is set, you want it from deep core of your heart. You want to make sure nothing can come in your way. People cannot come in your way. You yourself cannot come in your way. Your life cannot come in your way, right? And that is what we call being unstoppable. You think it's worth? If you have a big goal, you want to have that zeal inside. If you have that, nobody can stop you, right? So let's see. Now, why do you want to? I meet people who want to do IAS, who want to do NEET examination, who want to be influencers, and then they come and cry. I tell them the same story once again. But now,
व्हाट इज बीइंग अनस्टॉपेबल बनने का मतलब क्या है? आपके दिमाग में पहला जो आ रहा है कि अनस्टॉपेबल वो पर्सन है जो एक स्ट्रॉन्ग जील के साथ चलता है और उसको रोकने के लिए बुलडोजर चाहिए, और बुलडोजर से भी नहीं रुकेगा, उसको टैंक चाहिए रोकने के लिए. Sometimes that is what unstoppable means. But unstoppable is not always tough, is not always so strong, though sometimes it may be required. But other times you want to be just flexible and you don't leave your eyes off your goal. And if you fail for a while, you again reset, readjust, and go to reach there. Did you get my point? So on one hand, you can be like strong, like रोकने के लिए टैंक चाहिए इसको, and other point you can be so flexible that nothing can stop you. And sometimes you need a balance between them. Got it? So I'll tell you one story. What comes to you? So sometimes you can be like, लोग कहते हैं कि I want to be strongly rooted like tree, nothing can shake me. And if the wind is so strong, और अगर आप झुकते नहीं हो एक वन टाइम पे, वो ट्री जड़ों के साथ उखड़ सकता है, राइट? समटाइम्स छोटी सी दूब होती है, तूफान झेल लेती है. सो वी वांट टू बी फ्लेक्सिबल एट टाइम्स एंड वी वांट टू बी स्टबर्न एंड फर्म एट अदर टाइम. So here's another story. Muhammad Ali, one time he was short in height, and उसका जब one time in his career there was a man जिसके साथ उनका फाइट सेट हुआ, and that fight was so big, so huge that, and the fighter was, and उसके सामने जो फाइट करने वाला था वो उनसे 4-5 इंच लंबा था, और इतना कि मोहम्मद अली का हाथ तक शायद ना पहुंच पाए उस तक. और कमेंटेटर जब फाइट शुरू हुई तो कमेंटेटर कह रहा था ये फाइट होनी नहीं चाहिए, दिस शुड नॉट हैपन, ये फाइट कभी भी किसी भी टाइम खत्म हो सकती है, बस होने वाली है. और ये आई थिंक लिस्टन वाज द नेम ऑफ द बाउंसर, और ये उसका पहला पंच एंड ही मिस्ड इट, and दूसरा punch and he missed it, and every time commentator was saying this should not happen, this will kill somebody, and another punch missed. In that fight alone he missed somewhere around 50 punches unanswered, where the boxer hit him and it didn't reach his face, where everybody who said you should go and fight with the problem face to face. Sometimes you want to be smart and know how to stop yourself from getting hit. And 55 somewhere around 50-55 punches, Muhammad Ali knew that this man doesn't have a stamina. He has a powerful punch, but if he gets through 50-55 punches, he will get tired really soon. And that was the moment. It was moment of Muhammad Ali. He made a punch, a hit, knockout. So sometimes you need to be as flexible and keeping your eyes always on the goal. If you want me to describe what my formula of being unstoppable is, keep your eyes on the goal and keep your approach flexible. Sometimes you may need to be firm, like a nail. Sometimes you want to be flexible like grass. Wind, storm will come, go, and you will still be there, right? And the intelligence to know what is required when. There was a time. Why do I say that? Because in my medical college days, I was having difficulty in focus. I had a phase of depression and I couldn't study. At that time, one day I picked up my jeans and pick up a blade and wrote with that, "Jump ke rakhna kadam. I'm stoic. Nobody can stop me." All the bravado sort of things. Jump ke rakhna kadam. And all I got was attention from people, and nothing else happened. My results did not change because rather than this, I wanted a way to relax myself, to keep my mind calm so that I could focus better, right? So, which I learned later on and which helped me. So, when we want to be, what is unstoppable? What image of unstoppable comes to your mind? Make it clear. At some times, I'm repeating it time and again, you want to be firm, you want to be strong like rock. Other times, you want to be flexible like grass. But in the end, the approach is same. आपकी नजर आपके गोल पर है, और आपकी नजर पूरी तरह से आपके गोल पे है, और आपकी जो अप्रोच है वो फ्लेक्सिबल है. वंस यू हैव दैट, यू विल कम टू नो यू आर अनस्टॉपेबल. सो टेक अ मोमेंट राइट नाउ टू थिंक अबाउट व्हाट डू यू थिंक is makes you unstoppable. What do you think is your way of becoming unstoppable? And more important, why do you want to be unstoppable? अगर आप unstoppable हो जाते हो, बन जाते हो, how will your life be different? Can you think of yourself जहाँ पे लोग आपसे कहते हैं, wow, ये पर्सन, ये लड़का, ये लड़की, ये मैन, ये वुमेन, once they decide, nothing can shake them. जो इन्होंने करना है वहाँ तक पहुँचने से इनको कोई नहीं रोक सकता. I still remember a story of Shah Rukh Khan when somebody came and he was good in studies and somebody told his mother, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है, ये कहता है मैं मूवी स्टार बनूंगा.
शी सेड, अगर इसने कहा है ये मूवी स्टार बनेगा तो ये बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता. You want that kind of zeal. That is what we call being unstoppable, and that is what you want to cultivate if you have to do your work. Got it? So how to become unstoppable? So you learn that why do you want to be unstoppable? It doesn't matter आप कितना भी पॉजिटिव बन जाओ, it doesn't matter आप कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख लो, it doesn't matter आप कितने मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, life is going to come in your way if your goal is really big. ब्रायन ट्रेसी कहते थे आपकी लाइफ में तीन चीजें सर्टन है, या आप किसी पंगे से बाहर निकल के आए हो, किसी पंगे से बाहर निकले हो, या किसी पंगे में घुसने वाले हो. Right? Either you are in a crisis right now, you want to come out of a crisis, or you're just about to enter into a crisis. And at that point, you need a zeal, a resource that says, be unstoppable, don't give up. This is your time now. So what happens? How to do that? Do you think there is a way to do that, to get that done? First of all, सबसे पहले आपने याद रखना है, आपकी मेरी लाइफ, हम सब अपनी लाइफ में रेजिलियंट रहे हैं. We were unstoppable while we were growing up. पहला कदम था, हमारे पेरेंट्स जहाँ रोकते थे हम वहीं जाते थे. There's a story by Freud. Freud एक पार्टी में गए और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा गायब हो गया. Everybody was worried. ये बच्चा कहाँ गया, पानी में तो नहीं डूब गया. फ्रॉइड ने बच्चे की माँ से पूछा, कोई ऐसी जगह थी जहाँ तुमने इसको जाने से रोका था? She said, हाँ, मैंने उसको कहा था फाउंटेन के पास मत जाना. फ्रॉइड स्माइल किया, बोले जाओ, वो फाउंटेन के पास ही खड़ा होगा. Same thing happened. वो गए and they found the boy sitting beside the fountain. We were resilient. जो हमें करना था वो हम करके ही छोड़ते थे. We had no other way, right? जब हम चलने लगे, and how many times did we fall? We started to stand up and fell down, adjusted, stood up, fell down, adjusted, stood up, fell down. How many times did you fall while you were learning to walk? Hundreds of times. Did you give up? No. Did you change your approach? Yes. Every time you fell down, you found a reason why did you fall down, what adjustment is needed, and you went up. Why? Because in your mind's eye, first that was fun, and second you had that sense that, oh, I'm learning, I'm growing, I'm growing up, I'm getting better, and that is what kept you unstoppable. The first thing you want to make sure as you grow up, when you set a big goal and you're sure, you're certain this is what I want, you want to be aware, why do you want this goal? I asked a boy who failed in his NEET examination, and he came to me. He said, मेरा एक साल वेस्ट हो गया. I said, तुम डॉक्टर कितने साल के लिए बनना चाह रहे हो? एक साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए? He said, I want to become a doctor for the rest of my life. I said, next 70 साल के लिए तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो. एक साल, how much does that matter? And then the boy's eyes opened up. He said, yes. I said, उसके मुकाबले में how much does this matter? And trust me, why I'm saying this? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सैकड़ों हमारे बैच में 500 डॉक्टर्स तो हमारे साथ में थे जो हम बन रहे थे. आज कितने लोग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं. आज की डेट में से कितने लोग थे जो एमबीबीएस में फेल हुए थे, कितने लोग एमडी के टेस्ट में फेल हुए थे. आज जब वो टॉप मोस्ट पोजीशंस में हार्ट सर्जरीज कर रहे हैं, ब्रेन सर्जरीज कर रहे हैं, you don't even remember, right? So first, keep an eye. How does it happen? Number 2, remember why did you want to start to this goal in the first place, right? What was important to you regarding this goal? And number 3, when you have that, what was important to you? Because जब आप करना चाहते हो, when you start, that is something that is going to come. That is what is going to happen. I was doing one medical checkup, medical surgery camp. I made arrangements, but then it got too much. And one day I couldn't sleep. I was restless. And while I was restless, I was thinking, I said, oh, why did I land it into this? And immediately an image came to my mind. After the end of this operation camp, I will have 30 people who will be happy. I'll have 20 people from my team who will be happy. I had an image in my mind's eye that all of us are sitting together, having tea and celebrating on what is going on there. And once that happened, we enjoyed it, right? So, ये गोल आपने शुरू क्यों किया?
आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था. कीप योर आइज ऑन दैट. एंड फोर्थ, व्हाट आर यू लर्निंग ऑन द वे. जब आपके प्राइस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जब प्राइस आपके नज़र में हमेशा है, और उस टाइम पे आके इमेजिन कीजिए आप एक गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी की विंड स्क्रीन के सामने से आप रास्ते पे देख रहे हो एंड सडनली विंड स्क्रीन पे एक कीड़ा आ जाता है. अगर आप कीड़े पे देखोगे तो आप रास्ता नहीं देख पाओगे, लेकिन जब आपकी नज़र रास्ते पे है, कीड़ा आपको नहीं दिखेगा. तो आपका रास्ता आपका एंड रिजल्ट है. मोर यू विल फोकस ऑन दैट गोल, लेस will be your chances of getting distracted. All those troubles are like, और वो सारी की सारी troubles जो आपको दिख रही है वहाँ पे, they are like those points on the windscreen. आपको वहाँ से नजर हटा के अपने गोल पे रखना है. They will start to look small, and you truly will start to become unstoppable. Remember, whenever you have a price you want to pay, you're ready to pay, price will become easy. सो आपका गोल कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, कितना विविड है, कितना इमोशनल है आपके लिए, दैट विल हेल्प यू गो थ्रू द प्रोसेस. एंड देन somebody will come and say, yes, that man is truly unstoppable. So I'm happy that you are here, and I'll hope to see you soon. Subscribe to this channel and we'll keep describing the strategies that will make you focused and unstoppable.